Hi class 11, today we are discussed about to electromagnetic spectrum. Previous video lecture we are discussed about to electric field and magnetic field components. Previous video lecture we are discussed about to electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. Now when electric field and magnetic field combine, then the form of electromagnetic spectrum. When electric field and magnetic field, suppose this one is the magnetic field and this one is the electric. Electric field and magnetic field are combined, then this terms, the new terms are introduced. This terms is electromagnetic spectra. Electromagnetic spectra. Now today we are discussed about two electromagnetic spectra. So the electromagnetic spectra, so when electric field and magnetic field, when magnetic effect and electric effect are combined together, then new terms are introduced to electromagnetic radiations. Electromagnetic spectra. Electromagnetic spectra. All electromagnetic wave have the same speed. All electromagnetic wave have same speed 3.0 into 10 की power 8 meter second inverse. The different type of radiation differ from the one to another their wavelength and therefore in the frequency. Different types of radiation. Different type of radiation have the different wavelength and different frequency. V equals to Cy lambda. V equals to Cy lambda. C is the constant. C is constant. C is constant. The electromagnetic radiation with the long wavelength has low frequency. The electromagnetic radiation have with long wavelength has low frequency. Long wavelength and low frequency. Low frequency. Electromagnetic spectra है radiation with long wavelength and low frequency, while the radiation with the short wavelength has large frequency. While the radiations with short wavelength and high frequency, short wavelength and large frequency, it means जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है. वाइल द जो रेडिएशन होता है सिर्फ रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन में क्या होता है, उसमें हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ होती है और क्या होती है, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है. लॉन्ग फ्रीक्वेंसी. द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द कंप्लीट range of
the complete range of electromagnetic wave the complete range of electromagnetic wave is called electromagnetic spectra. Electromagnetic spectra. यहाँ पे हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है एंड लो फ्रीक्वेंसी होती है। और जो सिंपल रेडिएशन होता है, रेडिएशन में क्या होता है, वायर रेडिएशन विद शॉर्ट वेवलेंथ एंड लार्ज फ्रीक्वेंसी। और जो ये दोनों मिला के कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। The arrangement of different types of electromagnetic radiation in the order of increasing wavelength या decreasing frequency is known as electromagnetic spectra. It means the arrangement of different type the arrangement of different type the arrangement of different type of electromagnetic radiation magnetic radiation electromagnetic radiation in the order of increasing frequency increasing wavelength and decreasing frequency. Increasing wavelength and decreasing frequency. Decreasing frequency are called electromagnetic spectra. Are called electromagnetic spectrum. It means the arrangement of different type of electromagnetic radiation in the order of increasing wavelength and decreasing frequency are called electromagnetic spectrum. The complete electromagnetic spectrum in the given figure. The complete electromagnetic spectrum in shown as to the given figure. The figure different region of spectrum are identified in the different names. It means जो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा, जो आपके पास है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो ये फिगर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, इसमें क्या है कि जो हमें क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट नेम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसको, डिफरेंट रे को. इट इज इंटरसेक्टिंग टू द नॉट विजिबल लाइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो विजिबल लाइट होती है इसमें, तो इट इज इंटरसेक्ट टू नॉट दैट विजिबल लाइट वाइल ह्यूमन आई
The detect constitute only small portion the total electromagnetic spectrum. जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे जो आपके पास साइड में एक ह्यूमन आई के लिए एक छोटा सा सेगमेंट दिख रहा है, वो विजिबल रेंज है किसका, ह्यूमन आई का। उसके बाद हमारे पास जो आता है कि द विजिबल स्पेक्ट्रम is also shown the separately different colors in the spectrum corresponding to the wave of different wavelength and frequency. Out of various wavelength and frequency, out of various colors in the visible range, violet color corresponding to the radiation of maximum frequency 7.5 into 10 की पावर 40 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वायलेट कलर जो होता है, वायलेट कलर की जो विजिबल रेंज होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। एंड मिनिमम वेव लेंथ 380 नैनोमीटर। मिनिमम वेव लेंथ 380 नैनोमीटर NM। 380 जो हमारे पास होता है नैनो। वाइल द रेड कलर्स corresponding to radiation in the minimum frequency 4.0 into 10 की पावर 14। रेड कलर 4.0 into 10 की पावर 14, 4.0 into 10 की पावर 4.0 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। And the maximum wavelength 760 nm, and maximum wavelength 760 nm in the red color. The frequency and wavelength of the radiation corresponding to the color between the wavelength or to the extreme value. The region just above the value, visible portion in the ultraviolet region around 10 की पावर 16 हर्ट्ज, 10 की पावर 16 हर्ट्ज विजिबल रीजन। जो हमारे पास क्या होता है, जितना जो विजिबल रीजन होता है, जिस पोर्शन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम में जो हमारे विजिबल जिससे हम देख सकते हैं, उसका विजिबल रीजन होना चाहिए 10 की पावर 16 हर्ट्ज। These radiation are included in the sun ray, although these are visible behind the ultraviolet radiation on the side. Increasing frequency radiation in the all side, increasing frequency, decreasing wavelength. We have the region X-ray around the 10 की power -9 hertz, 19 hertz. These are produced when stream electron strike heavy metal target. Behind X-ray comes to gamma rays and originate from the radioactive substance, and cosmic ray which originate from outer sphere and continuously fall on the earth. The portion below the visible region decreasing order of frequency in infrared. The portion below visible region decreasing order of frequency. The portion below the visible region. The portion below visible region. The portion below visible regions, decreasing order of frequency. Decreasing order of frequency. Decreasing order frequency. Decreasing order of frequency is infrared region.
infrared region regions around to 10 की पावर 13 हर्ट्ज into 10 की पावर 13 हर्ट्ज. The produce high thermal effect and heat radiation below the infrared regions or microwave around 10 की पावर 10 हर्ट्ज. Microwave around 10 की पावर 10 hertz. These are used the telephone circuit and the radar. This region in the radio waves. This region is regions around radio waves. Radio waves region 10 की पावर 6 hertz. The radio wave regions 10 की पावर 6 hertz which have the lowest frequency and highest wavelength. It means जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, उसका क्या होगा, हाईएस्ट वेवलेंथ होगा इसमें. तो लोएस्ट जो हमारे पास क्या है, जितनी ज़्यादा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होगा. The different type of radiation are arranged in the decreasing order frequency or increasing order wavelength. Cosmic ray gamma ray, X-ray, ultraviolet ray, UV light, ultraviolet ray, visible radiations and microwave or radioactive wave.